Good evening, everyone. Topic of today's session is optimizing your investment strategy. And under this, we will discuss GST reforms and impact, consumption story, Trump trade tariff, and what next. Nifty Next 50 from Tata NFO, 12th to 26 September, and how S2 is looking overall market view. For this, we have invited Mr. Mehul Rathore, lead passives, Tata AMC. Mehul sir has over 18 years of experience in sales, relationship, channel, and team management. He has joined Tata AMC in July 2020 as China Red, MFD and Banking Retail, Mumbai. Now, I would like to request Sir to take the session forward. Over to you, sir. So, firstly, thank you so much for giving the opportunity. And what I will do, I'll try to keep the session in Hindi and English. मतलब जहाँ लगेगा हिंदी बात करूंगा, जहाँ लगेगा इंग्लिश बात करूंगा, जहाँ यही दो लैंग्वेज हैं जहाँ पर आई विल कीप स्विंगिंग। और कहीं आपको लग रहा है दैट यू हैव एनी क्वेश्चन, सर्टेनली आप सवाल पूछ सकते हैं। यू कैन पुट इट ऑन चैट बॉक्स एंड आई एम श्योर कि मैं पोस्ट द सेशन बात कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली ये बहुत वास्ट टॉपिक है जिस पे हम आज बात करेंगे, बट इसको कोशिश की है कि मैं कंसाइज करके बेसिक चीजें कवर करेंगे हम, जो जिससे हमें एटलीस्ट एट्रीब्यूशन मिल जाएगा और अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि व्हाट्स द ट्रेंड विच इज काइंड ऑफ रनिंग। सो I will take another maybe 20 to 20 minutes, 20 to 25 minutes in taking you through this presentation. And I'm sure as and when we progress, you will also understand the structure. So we will talk about obviously the सबसे most prominent topic is the GST reforms. I think this has been oversold in the media consistently, but it is worth talking about. It's a big breakthrough which has come through. Tariffs, I think कई समय से आई थिंक हम ये वर्ड सुन रहे हैं। आई थिंक दिस इज द मोस्ट सर्च्ड वर्ड if you Google also for this year, after I think after Donald Trump, I think this would be the most searched or used word. Followed obviously little outlook, basic outlook, which I would want to leave, जो आपको कहना चाहूंगा. And last is obviously the product launch, which हमें लगता है कि ऐसे मार्केट में ये suitability. So this is the flow and the sequence I will try to at least go through it. So starting from GST, I think this is something which um, was being worked out for quite some time. Basis what I've been hearing from the ministry, that this has been बहुत टाइम से ये प्रपोजल बन रहा है, एंड फाइनली ऑब्वियसली इट्स कम थ्रू. सो आई जस्ट वांट टू गिव यू अ क्विक ग्लिम्स. इसमें बहुत सिंपल और सरलता से इसको चार्ट में डाल दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या महत्व है. सो प्राइमरली देयर वर फोर slabs if you look at GST. And today, obviously, out of that would be 5%, 12, 18, and 28. There are two slabs which are getting discontinued effective 22nd September. We still are about 7 to 8 days away from that. But new slabs जो आएंगे उसमें predominantly 5, 18 और 40% जो एक नया इंक्लूजन किया जो सिन गुड्स के ऊपर रहेगा. Along with that, the 0%, which is obviously will be levied for few segments. So this is a very clear sign by the government. I think ये एक second step है इस साल, post giving relaxation to the direct benefits on the income tax this year. I think that is the first step जहाँ पर वो चाह रहे हैं कि लोगों के पास ज्यादा पैसे रहे predominantly. और दूसरा, by cutting taxes through the GST also gives another booster where you will end up spending lesser through taxes, while you'll be spending more because goods will be much cheaper. That is the assessment which they have given. So obviously इसका एक बूस्ट मिलेगा कंजम्पशन पे. देर आर ऑब्वियसली डिस्कशन विच इज हैपनिंग दैट वाइल ये दे रहे हैं, इसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट को क्या आएगा. सो ऑब्वियसली करीबन 480 से 500 बिलियन का इम्पैक्ट इसका जीएसटी रेट के रिडक्शन में आएगा, विच इज अ बिग इम्पैक्ट. $480 billion इज अ बिग इम्पैक्ट.
While if you look at the breakup, 18% of of the revenue was coming through this 18% slab, um, which stays there. बट ये 12% और 28% को कहीं ना कहीं रीशफल करके रीस्ट्रक्चर करके कुछ सारी चीजें नीचे ले आएंगे, कुछ सारी चीजें ऊपर ले जाएंगे डिपेंडिंग ऑन दी कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट. वाइल बेसिस व्हाट गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू लॉस जरूर होगा, बट इसका ऑफसेट एक वाइडर टैक्स बेस जब इंक्रीज होगा, मोर पीपल विल कम इनटू टैक्स, एक इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से स्पेंडिंग में फोकस आएगा. कंपनीज विल मैन्युफैक्चर मोर, देयर विल बी मोर डिमांड, हाइपर डिमांड विल बी क्रिएटेड बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज मोर लाइक अ लैग इफेक्ट. सो एक इंडस्ट्री की वजह से कई सारे इंडस्ट्रीज के बेनिफिट्स खुलते हैं. एंड आई थिंक गवर्नमेंट का फिस्कल का जो टारगेट है वो बहुत क्लियर है कि दे वुड वांट टू एटलीस्ट वर्क टुवर्ड्स इट. ऑब्वियसली कुछ बफर है जहां पर जिसकी वजह से आप गवर्नमेंट विल ट्राई टू कवर अप द डेफिसिट, जो आरबीआई डिविडेंड्स हो गई जिसकी वजह से इट इज गॉन अप. जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वहां पर वो लोग केयरफुली काम करेंगे इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट के दे आर मैनेजिंग बोथ फिस्कल एज वेल एज डेफिसिट. डिसइन्वेस्टमेंट जो काफी टाइम से बहुत तेजी से नहीं हुआ है इस लास्ट 3-4 साल से, आई थिंक वहां पर कुछ एक्शन दिख सकता है. और आई थिंक जो केपेक्स यूटिलाइज नहीं हुआ था बिकॉज सरकार नहीं बनी थी लास्ट ईयर, सो गवर्नमेंट पॉलिसीज वर काइंड ऑफ डिलेड because obviously when elections are there, a lot of things goes on hold. I think that had some budget allocation on capex, जिसकी वजह से obviously they think that they will be running on the target maybe in the next 1 or 2 years. So mainly क्या benefit है? I have to if I had to put it. So I think this will be across the grid. If you look at मेनली आपके एफएमसीजी, आपके स्टेपल्स, जहां पर प्राइमरली जो एकदम ग्राउंड पे मैसिव कट्स दिखेंगे, उसका ऑब्वियसली बेनिफिट एंड कंज्यूमर को दिखना चाहिए, विच आइडियली शुड बी पास्ड ऑन. आई थिंक द फोकस इज लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज इज कॉन्टेम्पलेटिंग हाउ मच कैन बी पास्ड, हाउ मच कैन बी केप्ट. बट जैसा मार्केट कॉम्पिटिटिव होता रहेगा, आई थिंक प्राइसिंग की वजह से you will see that would be passed on to the end consumer. ऑटो में हमने ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया है, विच इज कम थ्रू इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग. ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स मार्केट शेयर, तो अपना भाव कम करेंगे ताकि कोशिश करें कि दे कैप्चर द मार्केट शेयर by lowering the price, which obviously GST is giving the benefit. आई थिंक इससे एक अच्छा चीज होता है कि जब आपकी सेविंग्स प्री टैक्स बच जाती है और आपके एक्सपेंसेस के टाइम पे टैक्स कम होते हैं, लोगों के हाथ में जेन्युइनली पैसा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एनपीएस जो ऑब्वियसली काफी हेल्दी रहे हैं वो और हेल्दी लेवल्स पे इंक्रीज होते हैं. आई थिंक दैट इज द वेरी ग्रेट थिंग विच इंक्रीजेस that people would want to take more loan, governments would want, the banks would want to disperse, NBFC would want to disperse a little more aggressively because NPA numbers are. So it is a vicious circle. इसके वजह से काफी एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है जिससे आपका borrowing goes up, and obviously it leads to very healthy cycle, which creates a multi-year, मतलब it's actually a multi-year एक ड्राइवर होता है which can help you. Insurance obviously has been a big flipper year, almost nil हो गया है, so I think that gives great benefit in this sector. Consumers obviously I mentioned, I think यहाँ पर हाउस होल्ड सेविंग्स का बहुत बड़ा सेविंग होगा. बट अगर मान लो कि कंपनी ने पास ऑन नहीं किया कुछ, तो वो जो कॉस्ट सेविंग्स होगी वो उनके मार्जिन्स को हेल्प करेगी एक्सपैंड करने में. और कहीं ना कहीं उसकी वजह से ऑब्वियसली आपको सडनली स्टॉक प्राइसेस में वॉल्यूम्स तो हल्के बढ़ेंगे ही, साथ ही साथ में मार्जिन एक्सपेंशन भी दिखेगा प्रोवाइडेड हाउ द सेल्स एक्चुअली टेक्स अप. सो आई थिंक ये पॉकेट्स में चलेगा डिपेंडिंग ऑन विच कंपनीज पिकिंग अप व्हाट रूट. बट अगर कुछ चीजें पास ऑन नहीं हुई तो कंपनीज की मार्जिन एफिशिएंसी भी बढ़ती है. तो ये दोनों तो के लिए अच्छा है फॉर द एंड कंज्यूमर एंड फॉर द कंपनीज जो एक रफ पैथ से जा रहे हैं जहां पर भी दे वुड वांट मार्जिन स्टेबिलिटी टू कम थ्रू.
बाकी आई थिंक एक टेलविंड भी होता है जब आपका जीएसटी में कट आता है, तो प्राइसिंग में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। कहीं ना कहीं इनपुट टैक्स जो कई सारे इंडस्ट्रीज बेनिफिट कर लेते हैं फ्रॉम द सोर्स, तो उनके लोअर होने से आपके सीमेंट सेक्टर, मेटल, कहीं ना कहीं दे बेनिफिट, बिकॉज कहीं ना कहीं दे हैव अ प्रेशर जो फर्म पास ऑन नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ वट एवर दी पॉसिबिलिटी ऑन मार्जिन प्रेशर। कहीं ना कहीं I think diagnostic and hospitals very very positive biases on this lower tax. I think that will create more environment which is healthier. I think people will take more insurance relatively what they used to earlier think कि अपने at least they would want to cover more risk. At the same time, also do not be conscious of using good quality hospitals and diagnostic at the right time. So I think ये एक positive benefit है which will be leading. While obviously we think revenue loss है, which will be obviously 0.1 of the GDP, which is not very big. मतलब इतना बड़ा स्पाइरल इम्पैक्ट की वजह से एक कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट थिंक्स कि वॉल्यूम की जो रिकवरी विच इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू सी कॉन्फिडेंस। सी एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट इज बीन स्पेंडिंग केपेक्स फॉर क्वाइट सम टाइम, मतलब दे आर ओनली पुटिंग, दे आर इन्वेस्टिंग, दे आर गिविंग पीएलआई बेनिफिट्स, बट कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर आल्सो हैज टू पिक अप। और प्राइवेट सेक्टर को कॉन्फिडेंस कब आता है? जब उनको लगता है कि भाई वॉल्यूम ऊपर जा रहे हैं बिना स्टेरॉइड्स के। तो जब टैक्स आउटगो फॉर अ कंज्यूमर कम्स डाउन, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम गोज अप, मैन्युफैक्चरर सोचते हैं चलो अपन और प्लांट डालते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। इट इज अ स्पाइरल इफेक्ट, दे विल लीड टू मोर जॉब्स, सो दिस विल हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म बेनिफिट इन द टाइम अहेड। सो प्लीज डोंट टेक दिस जीएसटी एज जस्ट वन ऑफ द काइंड। आई थिंक इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। सो ऑब्वियसली इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करके मैं सिंपल टर्म्स में आपको यही बताऊंगा कि last year, obviously this year, basis the last year consumption, obviously we see a 480 billion kind of a gap. Obviously FY 26 में ये revenue loss 640 billion हो सकता है, बट उसको ऑफसेट करने के लिए ये सब है। सो आपके लेफ्ट में जो चीजें हैं जिसकी वजह से रेवेन्यू लॉस हो सकता है गवर्नमेंट को, यहाँ मेंशन है, राइट फ्रॉम obviously the personal income tax, the corporate tax, the custom duty collections, the food subsidy जो देनी पड़ती है in some or the other way to ensure the lower strata is taken care of. And obviously along with that the GST, which is a big number which will count here, इसका एक impact है जो हम compute कर रहे हैं। बट इसका ऑफसेट यह है कि ऑब्वियसली एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी, हायर डिविडेंड्स फ्रॉम आरबीआई, केपेक्स में कट आएगा बिकॉज ऑब्वियसली जैसे उनको लगता है कि प्राइवेट कंपनी विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग, गवर्नमेंट आल्सो विल स्टार्ट टू सी दैट केपेक्स कैन बी कट। सो दैट विल गिव देम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कट लाना पड़ेगा ताकि वो जो possibly can give you some spinner there. And I think these are all things will help to keep the balance intact. See, सबसे important factor है कि uh, जो जीएसटी कट्स हैं, आई थिंक 60% का जो कट है विल इम्पैक्ट ऑन दी सीपीआई, जो हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, जो इन्फ्लेशन का होता है, उसमें इम्पैक्ट आता है। तो आपकी जो प्राइजेस हैं फॉर द लोएस्ट सेगमेंट 60% इम्पैक्ट करता है। आई थिंक दैट कैन गिव अ वेरी बिग इम्पैक्ट। योर इन्फ्लेशन विल ऑब्वियसली कम लोअर। इट विल ऑल्सो गिव द comfort to the RBI in the times ahead to ensure that growth as well as the cost of goods going up will keep coming down. I think that is a great way of passing on without doing a rate cut on an immediate basis. So I think that is something which will be very, very important to watch. ये एक ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि और टू अंडरस्टैंड इन द सिंपल टर्म्स व्हाट वी डिड इज हमने ट्रेड बैरियर्स पिक किए और रैंक देखा कि कौन सी कंट्री रैंकिंग टर्म से कहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। So while the GST is one way of the government to give as much as benefits outside, for the companies, for the consumers, as well as the economy to boost, the trade has been one of the influx point where I think government realize के trade का impact कई जगह पर हो सकता है। उस पॉइंट को ध्यान में रख के we need to ensure that कि when the times may not be great,
मतलब because of the uncertainty in the global environment, it will be good to keep give a booster right now, so that we keep running at the pace at which we are right. So ये एक इंडेक्स बोलता है, मतलब बेसिकली इट्स अ रैंकिंग इंडेक्स which says that which country stands where. So obviously Russia is sanctioned in most of the places. Our rank is also at 120 out of the best. Obviously is Hong Kong in terms of the trade. So they don't have any trade restrictions, trade barriers are not there. Singapore is a free, it's a super country where it is the epicenter, so that it becomes a epicenter. Uh, so right now, if you look at with the trade barriers which are imposed, whether it is import or export, the countries which are कर्बिंग, मतलब कई सारी कंट्रीज होती है जो इंपोर्ट करते वक्त अपने डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर्स लगाती है, ताकि डोमेस्टिक कंट्री कंपनीज एफिशिएंटली प्राइस के ऊपर ऑपरेट कर पाए, ताकि हमारा एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट ना आए। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से ये रैंक बनता है कि हम लोग एज अ कंट्री इंपोर्ट करते वक्त भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं टू सेव गार्ड। एट द सेम टाइम ऑब्वियसली वी गेट इम्पैक्टेड बाय द कंट्रीज विच आर importing Indian stuff, so उसका भी इम्पैक्ट आता है। So we don't look good today in terms of our ranking, while USA is trying to swing mainly by what do you call, by negotiating. So US अपना negotiate कर करके अपने ट्रेड बैरियर्स या दूसरों पे लगा रही है जो पहले नहीं लगे हुए थे एट दैट रेट, और अपनी तरफ फ्री करवा रही है। सो उससे वो अपनी रैंकिंग इंडेक्स बढ़ा रहे हैं, अपना अपना जो ट्रेड का सरप्लस और डेफिसिट है उसको मेंटेन करने के लिए दे आर डूइंग सच सच थिंग्स। आई थिंक दिस कैन ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन सप्लाई चेन। महंगाई कई कई देशों में बढ़ेगी बिकॉज ऑब्वियसली जिसके ट्रेड बैरियर ज्यादा होते हैं उसका इम्पैक्ट होता है। इंडिया ऑब्वियसली imports very few things which at a lower end. We usually are known to import gold, oil. Obviously, oil is a big factor which determines a lot of price. But I think we've been using it very smartly over the last couple of years in order to making it in favor of us. तो आपदा को हमने एक अवसर बना दिया, an opportunity बना दी है over the last couple of years. So I think it is flipped on that side. Uh, what is the impact? Now, in simple terms, अगर आप इम्पैक्ट देखेंगे तो ये सही कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ ऑब्वियसली टॉप 10 सेक्टर्स वेयर यूएस के साथ में हमारे डील्स हो रहे हैं कई सालों से। while the there are the largest two which is pharma and telecom instruments which is electronics, वो exempt है because obviously उनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। हमारे लिए तो डिफिकल्ट होगा ही बट उनके लिए भी, because that will directly impact them. सो ये दोनों जो एक्चुअली एक चौथाई है, मतलब इट टिपिकली इज 1/4 ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स which is exempt. The rest obviously will have an impact, and हम कई जगह पर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि obviously वो impact will will hurt the industry which are part of it. But I think India also has given back the tariffs. It's not that only we are taking. I think we are also giving back. So I think there is going to be an impact on GDP. मतलब 60 to 80 बिप्स का एक एक कैलकुलेशन है। अगर यही चलता रहा तो 60 से 80 बिप्स हमको इम्पैक्ट करेंगे हमारे जीडीपी पे, बिकॉज ऑब्वियसली दे constitute 18%, which is obviously relatively sizable for us when you look at exports. वैसे भी we are a import heavy country versus what export we do, and it's an important market, so उसका impact होगा obviously we will have an impact. But yes, I think which INR depreciating कई सारे एक्सपोर्टर्स के लिए फेवरेबल हो जाएगा। राइट नाउ वी आर एट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ऑफ 88 bucks. सो ये सब चैलेंजेस हैं व्हेन यू लुक एट द टेलविंड्स ऑन द मैक्रो साइड, व्हेन यू लुक एट जो एक फ्रिक्शन चल रही है इंडिया यूएस चाइना की, मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है। There are a lot of uncertainty on borders, which is also kind of causing a problem. If you look at the India US and our आई थिंक जो की ड्राइवर्स थे यूएस टैरिफ के, विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट कैपिटल आउटफ्लोज। मतलब वी आर सीइंग कैपिटल आउटफ्लोज, हम देख रहे हैं व्हाइल एफआईआईज आर पुलिंग आउट मनी, यू आर सीइंग मार्केट्स, emerging markets also seeing some money going.
So there is an impact which is coming through. ऐसा नहीं है कि impact नहीं है. There is an impact. Um, but RBI is intervening whenever possible. I think डॉलर को सपोर्ट कर INR को सपोर्ट तब करेंगे जब हमें लगेगा. But there is an impact we are losing on dollar exchange, which can also have an impact. While um, I think एक चीज हमको लगती है कि if you look at the tariff, it has obviously led to increase in safe haven. मतलब गोल्ड में परचेजिंग हो रही है अगर आप देखेंगे obviously everyone knows that gold silver has done fantastic, and this is predominantly at the back के जब भी इंटरेस्ट रेट फेड काटते हैं ये हिस्टोरिकल व्यू है. And there is a there is a expectations of that usually gold rallies. um, while the if you look at the dollar index that also has come down, which also has an impact of seeing gold picking up more. Oil has corrected over the last 1 year. Obviously, that has an advantage to us when you look at India. But yes, एक वीक डिमांड है क्योंकि ऑब्वियसली ओवर सप्लाई भी है कहीं ना कहीं आपके ट्रेड बैरियर्स की वजह से लोगों के कन्विक्शन कम हो जाते हैं इन हाउ टू इंक्रीज ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. So these are impact which obviously has a spiral effect. But these are uncertainty which is obviously causing a lot of challenges, whether it is looking at the oil, you are looking at the dollar exchange, whether you are looking at India-US relationship in terms of the dollar which currently stands. So these are challenges which currently are facing. While we think rupee all time obviously low पे है, which supports exporters. I think that will help us in this challenging time जब तक हम हमारे tariff settle ना कर दें. I think that will favor the exporters. It also support the IT companies which apparently have seen certain slowdown in terms of the opportunity to scale up. Dollar index down है तो you see when that happens, emerging market के flows change हो जाते हैं. So that also has an impact. Then you look at the oil which I've already mentioned in the previous slide कि ये एक बहुत पॉजिटिव है इंडिया के लिए जब ऑयल प्राइसेस नीचे रहते हैं. It helps us to manage our balance. Gold obviously we've been it's touching new highs. I think that will continue. Our view on gold over the last 10 months has been very, very positive. We've been, all our calls, our CIU has been cautious, consistently maintaining that gold has to be, has to be a important allocator. And I think it is hitting all-time high every day when we look at it. So I just want to come from GST to what the tariff has caused in impact to the indices. So अगर आप globally देखते हो indices, I think very critical to see that worldwide, it's the best country which apparently has done well is Hong Kong in terms of market performance. So Hong Kong has delivered almost 40%. Obviously, Shanghai. China market has done well. Then Singapore has done well. Nasdaq, with this entire trade tariff barriers, Nasdaq continues to do much better than it is still in the top five. Going through this vicious US tariff trade, still it continues to do relatively well, and it has done well in even 6 months, in 1 year. While if you see India, in the last 1 year, it has shown negative return. Um, in the 6 months, it has recovered, but in a 1 year basis, obviously, we are negative if you look at the Nifty 100 index. So, just want to show that I think market has corrected sharply for India, while other markets have apparently done very well, even in the times we are. This is broadly the Indian market. So, while we understood the global, अब Indian market को देखेंगे तो यू वुड सी दैट ऑब्वियसली निफ्टी 50, वहां पर निफ्टी 100 हमने देखा था जो डाउन था, यहाँ पर निफ्टी 50 करीबन 2% डाउन.
रहा है लास्ट मंथ, एंड यू कैन consecutively over the last um, uh, it has kind of shown weakness. So I think what we feel that the primary reason, obviously, DII flows has been very strong. We have lost close to 14 billion in FI. तो FI हर महीना पैसा निकाल रहा है. हमने 14 बिलियन, if I had to put a FIDD, we have lost 14 billion in dollar terms versus 0.8 billion last year. मतलब last year से करीबन 1 बिलियन हम lose किए थे put together. While flows in Indian DIS is supporting us to keep the markets at where it is. So uh, I would say that कि index apparently has kind of been sideways or maybe negative over the 1 year period in Indian context. But when you break it down into three parts, when you look at the Nifty 100, which is typically the large cap, then you look at the mid cap and फिर small cap देखते हैं. अगर हम ये 500 मेनली जो 500 स्टॉक का पोर्टफोलियो अगर इवेल्युएट करेंगे, अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं, और आई थिंक हम लोग पिछले 18 महीने से एज अ हाउस ऑल्सो वी बीन पोजिशन टुवर्ड्स लार्ज कैप. इनफैक्ट हमारे हर कॉल में हर फंड मैनेजर यही कहते थे कि लार्ज कैप्स ओवर मिड कैप्स ओवर स्मॉल कैप्स. इनफैक्ट इन बिटवीन वी आर मिड कैप वैल्यूएशंस वर हायर, सो इनफैक्ट वी वर मेंशनिंग large, small, mid, while mid cap has been consistently surprising on earnings versus large and small, because obviously there's a lot of action in that space. But हमारा मानना है कि we've been consistently saying कि अगर large cap stock से अगर वही रिटर्न बन सकता है जो मिड और स्मॉल कैप से बन सकता है, तो then why you want to take that extra diversion and go into mid and small cap in an environment where you see globally things unsettling. There is war which is happening. There is there it will take time for us to set down. इस जो भी टैरिफ लगने वाले हैं उसके इन्फ्लेटरी इम्पैक्ट्स होंगे in many countries which will also have an impact. Countries which are going through recessionary phase, some are declaring, some are not declaring. But globally कई सारी countries हैं which are facing challenges of very high interest, record high interest rates, जो डेट सर्व करना मुश्किल हो गया है, नॉट ओनली यूएस बट मेनी अदर कंट्रीज. सो देर इज अ प्रॉब्लम एंड देर इज अ चैलेंज इन कंट्री स्पेसिफिक, जहाँ डिमांड पिकअप नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है. और ऐसे इन्वायरमेंट में अगर आप कंपेयर करो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड यू सी लार्ज मिड स्मॉल द वे इट हैज काइंड ऑफ करेक्टेड, स्मॉल ऑब्वियसली करेक्टेड more than mid and mid has corrected मोर देन लार्ज. ये ब्रेकअप है निफ्टी 100 का, जो हमें बताता है कि वेयर द मार्केट हैज करेक्टेड मोस्ट. सो विथ सो मच अनसर्टेनिटी वी वुड रादर सजेस्ट दैट कि इट्स बेस्ट टू स्टिक टू लार्ज कैप्स. आज की तारीख में रिस्क रिवॉर्ड इज मोर फेवर टुवर्ड्स लार्ज कैप. और ऑब्वियसली मिड एंड स्मॉल कैप को छोड़ नहीं सकते, वी आर एन इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग. बट एट दिस जंक्चर जहां पर हम हैं आज, हमको लगता है कि द रिस्क रिवॉर्ड is favoring towards large cap. And keeping that in mind, as an organization, we believe that if you want to play the large caps, and it's become very interesting that if you look at a lot of active large cap funds, there are times and cycles where it's becoming more and more difficult for them to beat the benchmark. So ऐसा हो सकता है कि one fund is doing well and beating the benchmark, but consistently उसको करना बहुत मुश्किल हो गया है. और 2018 के बाद तो ये और मुश्किल हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली 80% से ज्यादा आप लार्ज कैप नहीं ले सकते हो, मतलब कम लार्ज कैप नहीं ले सकते, तो योर चैलेंजेस आर मोर ऑफ प्लेइंग मिड एंड स्मॉल इन लार्ज कैप नाउ. तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टर हो गया है बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट रैशनलाइजेशन. तो अगर आप कोई भी लार्ज कैप कैटेगरी में भी प्ले करना चाहो इन द टॉप 100, which is the place to be when markets are a little more choppy, विजिबिलिटी नहीं है, जब आपको लगता है जीएसटी का इम्पैक्ट इंडिया में कंपनीज पे आ सकता है, और ऑब्वियसली वो रेवेन्यू लॉस का कैचअप करने के लिए 1-1.5 साल लगेगा. वॉल्यूम बूस्ट विल कम बट अर्निंग्स के वजह से इट विल टेक टाइम. सो जब इतनी अनसर्टेनिटी होती है ग्लोबली एंड विद इन इंडिया, और आप जब लार्ज कैप को देखते हो, तो अगर आप एक प्योर एक्टिव लार्ज कैप फंड पिक करते हो, जो बेंचमार्क को बीट करना भी कठिन हो गया है, हमें लगता है कि यू कुड लुक एट ऑन द पैसिव साइड either the Nifty 50
which is the top 50 stocks, or the Nifty Next 50. तो हमारा assessment ये है कि today if you want to invest into large caps, these are the two categories, the top 50 and the next 50. तो बड़े सिंपल तरीके से हमें लग we we believe that the 50 companies जहाँ इन्वेस्ट होते हैं उसमें आप obviously you're investing the largest of the largest, while the Nifty Next 50 are the next compounders जो next in line है basically you know वो काफी बड़े हैं in terms of size, बट एट द सेम टाइम इट हैज टू बी वी नीड टू नो दैट कि आज की तारीख में अगर अपने को पैसा लगाना है और वो स्टेबल रहना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ग्रोथ भी आनी चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वी फील निफ्टी नेक्स्ट 50 पॉसिबली कैन डू वेल। द रीजन इज आपके सामने हम लोग ने एक कंपैरिजन रखा है ऑफ ऑल द सेक्टर्स वेयर निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्वेस्ट, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इफ यू सी फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे बड़ा एक्सपोजर है निफ्टी 50 में, करीबन 36%, क्योंकि वो बैंक्स हैं, आपके टॉप 5 टॉप 4 बैंक्स इन्वेस्टेड हैं। आप कोई भी पोर्टफोलियो फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप उठा लीजिए, वहां पर आपको बैंक्स मिलेंगे। अगर आप ऑलरेडी एक एक्टिव फंड्स में इन्वेस्टेड हो जहां पर इसकी मात्रा कहीं ज्यादा है, आई थिंक इट मेक्स मोर एंड मोर कंपेलिंग रीजन टू लुक एट दिस फंड, कीपिंग इन माइंड कि इसमें आपको वो टॉप 5 बैंक्स नहीं मिलेंगे जहां पर आपका एक्सपोजर ऑलरेडी है। आई थिंक ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रॉइंग पॉइंट है जिसकी वजह से आपको अल्फा बन सकता है। सो while we are bullish on banks as a house, we are bullish, certainly bullish on banks, there's no question about it, but maybe your allocation could give you more at better weightage towards a different set of finances which can give you better। सो हमारा मानना है कि ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स में आपका एक्सपोजर कहीं और जाएगा। वी थिंक दैट एफएमसीजी, क्योंकि ऑब्वियसली बेनिफिट्स हैं, सो निफ्टी 50 में 7% है एफएमसीजी, इन निफ्टी नेक्स्ट 50 में करीबन 11% है, तो 4% ज्यादा है। कंज्यूमर सर्विस 9% है, 6% ज्यादा है। वी आर वेरी गुड, वी थिंक पावर इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग, आई थिंक दैट विल बी कंटिन्यू टू बी, वहां पर आप ओवरवेट हो। रियलिटी, जब भी इन्वायरमेंट थोड़ा सा हिलता है तो physical assets, whether it is commodity or physical, that is real assets, usually tend to do well. So it has exposure here also. Healthcare, we are very bullish on healthcare. वहां पर भी निफ्टी 50 से करीबन 3% ज्यादा। So I'm just telling you कि these are sectors where it is over heavy. IT, we are underweight by almost 8%. There are challenges in IT which we think we are facing. So I think that will help you to see lower growth which is coming through in the top 3 top 4 names nowadays। तो ये एक एडवांटेज है जहां पर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 को देख सकते हो। एंड बेस्ट इज वेरी वेल डाइवर्सिफाइड। टॉप 3 सेक्टर अगर आप पिक कर लो तो उसमें सिर्फ 40% एक्सपोजर है, निफ्टी 50 में 60%। तो आपको 19 नई इंडस्ट्रीज का एक्सपोजर मिलता है जहां पर निफ्टी 50 में नहीं। सो आई जस्ट वांट टू से दैट कई सारे लीडर्स हैं, अगर आप ये देखोगे, आप होटल उठा लो, दैट इज द लार्जेस्ट होटल इन इंडिया, द एयरलाइन, द बेस्ट एयरलाइन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर, a company which makes adhesive in specialty chemical, these are companies which are in the next 50 और they are doing very well क्योंकि उसमें मोमेंटम भी है, ग्रोथ भी है, और साथ ही साथ में वो आपके लार्ज कैप्स में आता है। तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है जो आप देख सकते हो। आई जस्ट वांट क्विकली शेयर दैट कि अगर आप रोलिंग रिटर्न निकाल के देखते हो निफ्टी 50 का, निफ्टी नेक्स्ट 50 का और निफ्टी 100 का, जो लार्ज कैप कैटेगरी में ही हम सीमित है, यू कैन सी रोलिंग में अगर 1 साल निकाल लो, 3 साल निकाल लो, 10 साल निकाल लो, आप पिछले 22 साल का या 23 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल दोगे और आप देखोगे, कंपेयर करोगे, निफ्टी नेक्स्ट 50 हैज ऑलवेज डन वेल इन रोलिंग, इट हैज कंसिस्टेंटली डन वेरी वेल। तो इसको उस पॉइंट से देखेंगे, इट हैज ऑलवेज डिलीवर्ड बेटर अल्फा। वाइल अगर कैलेंडर रिटर्न देखोगे तो हमने क्या कर लिया है, हमने सबको प्लॉट कर दिया है 2003 से। बहुत इंटरेस्टिंग है डेटा, एंड आई विल जस्ट टेक लास्ट 2 मिनट्स टू मेंशन हियर कि इफ यू लुक एट निफ्टी नेक्स्ट 50 2003 से 2017 तक
out of, I think, you know, 15 years, 11 साल it has outperformed Nifty 500. Nifty 500 has predominantly outperformed Nifty 50 most of the times. तो Nifty 500 एक broader index है. जब broad market चलता है तो कौन से इंडेक्स चलते हैं, हमेशा Nifty 500 चलता है. तो हमारा मानना है कि जब भी ब्रॉड मार्केट चलेगा Nifty 500 बहुत अच्छा करता है और वो Nifty 50 को बीट करता है. बट उससे एक कदम आगे Nifty नेक्स्ट 50 है जो Nifty 500 को भी बीट करता है. Nifty 500 में मिड एंड स्मॉल कैप भी है. But Nifty Next 50 only staying in large cap still is able to beat Nifty 500. So इसमें potential of those companies है जो high growth high alpha देते हैं. Obviously volatility भी ज्यादा है. But interesting बात है कि लास्ट एक साल में Nifty 50 Next 50 ज्यादा गिरा है ये तीनों सेक्टर्स को. सो अब एक अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है फॉर एवरीवन टू लुक एट इट बिकॉज क्योंकि गिरा है there is a lot of scope for it to do very well when market recovers in the times ahead. You pick up the SIP, I think again it has done very well. 16% का CAGR दिया है versus Nifty 50 and Nifty 100. So again it is a better choice. So I just wanted to call out that we have launched this fund on 12th, and we believe that this fund will give you that alpha. Obviously volatility रहेगी इस fund की, but with this category being in large cap, अगर आप लार्ज कैप में रहना चाहते हो इतने अनसर्टेन टाइम में, उस सेगमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द बेस्ट कैटेगरी टू लुक एट एंड इन्वेस्ट. And obviously the NFO starts 12th and ends at 26. We certainly feel that this category is very important. करीबन 30,000 crore is being managed in the Nifty Next 50. तो it is a important category to be. And अगर पैसा बनाना है with stability on the large cap category, obviously it will be volatile, but when you're looking at large cap, I think ये potential रखता है for you to take the segment to the next level. So with that, I will stop here. I think I have tried to cover the GST, predominantly what is our house view on the tariffs, some outlook where your biases are in terms of the equity performances on the global market as well as the Nifty Next 50. So I just wanted to kind of touch upon all these, and maybe I'll stop here for any questions if there are any. Thank you, sir. अब वक्त है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का. I would like to request all the participants to ask their questions one by one in the chat box. Or else you can raise your hands also. I will allow you to unmute yourself. रोहित सर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. Mehul, good evening to you. Hi, good evening. First of all, thanks a lot for a very informative session. I have three questions, one generic and two pertaining to the funds. So if you permit me, I will start with the generic question first. Please. So as you had already shown in your PPT that Nifty has delivered returns which are in the negative territory, and we are almost in the second last sequence when market returns are concerned. So this anomaly probably has happened with the Indian markets because as per my understanding, the valuations across 500 companies, that is large, mid and small, is not commensurate to the earnings of the Indian corporate sector. Broadly speaking, because of India's macros are very strong, and whatever you have shown in the slides is completely a testimony of that only. So now, as a sitting in a very high position, observing the market, how do you feel that this reversion to mean, will it happen in the next 1 year with crash in the market, or you see the earnings of the Indian corporate sector rising so rapidly to beat the valuations? What is your opinion? So thank you so much, Rohit, for the question. So today, what is happening? We are seeing a mixed bag of sectors contributing to the earnings. So there are earnings which is coming through, a lot of large cap names, which is growing. There are companies within the large cap category, and there are companies which are not growing at the pace that they should have been growing, and sectors are going through a rough patch. Basis, obviously, the sector risk and the sector challenges which they are facing. So there are a lot of positive surprises. So if you look at the last year or last quarter earnings, a lot of people had been saying that the earnings would kind of
would not be that great, or it will be subdued. But mid cap apparently had a very very positive surprise. In fact, it had a double digit when you look at the large cap names in terms of the earnings. So obviously there are certain companies which are surprising. There are certain companies which are skewed towards kind of degrowing or growing at a very slow pace. So you're right that there is a challenge today in the environment where margins are kind of getting shrink, basis obviously the cost inflation which is going up. Volume sales apparently has not picked up the way it should have happened, and that is primarily because the biggest spender in the system is the government. And with the last 15-18 months of lower spending on capex, basis the election which I had already mentioned, with PLI benefits which should have come through, basis in private companies picking up ownership. So गवर्नमेंट चाहेगी कि मैं 10 कदम चलूँ आप 2 कदम चले, कहीं ना कहीं वो 2 कदम चलना कठिन हो रहा है because they are not able to see the volume growth coming through. So I think government has been giving those benefits of PLI to those 9 sunrise sectors. They have announced a lot of the agenda by giving that benefits on the table. But somewhere companies obviously also should have the conviction that chalo, I will put a capacity and I will expand from here. That capacity will only come if there is a volume growth. Now, volume growth apparently in some segments is happening, in some segments is not picking up. This is which obviously government thinks that maybe let's give a push on the consumer spend, which can also have a spiral impact. So um, I think what we can't predict that whether there is going to be a large correction or there will be a minor correction, whether we will be sideways. Technically, there are certain segments of the markets which apparently have been sideways only. If you look at the sectors which apparently should have contributed. So, very difficult to comment whether we will see large drawdowns in the times ahead. But if we don't move also, and the companies are contributing by increasing the margins through these benefits, at the same time volume growth भी हो जाती है. I think हमारा जो अर्निंग्स ऑफ FY 26 जो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम लोग प्राइसिंग कर लिए, आपने कहा रिवर्जन टू मीन, there's a possibility that staying where we are and then time is moving ahead. If in the next 6 to 8 months, if we stay here in terms of the index, while earnings keeps catching up, I think we should look not that bad, and I think it is better to be in a safer place rather than to taking too much of adventure. Hence, people are chasing safer assets. Hence, people are chasing safer avenues. Largely, FI flows has gone out from large caps. I think we are the lowest. If you look at, if you look at the percentage of exposure to large and mid cap now, mid cap to nahi, but large cap mein to obviously we have hit kind of the lowest for quite some time now. So, a lot of pain has gone through, at least in certain category, and the broader index, which is Nifty 50, is typically dominated by large caps. Obviously, that will only go up when we see volume growth happening in the ground level, and FI is obviously coming back when they find comfort, when global stability comes through. So 12-15 months will be difficult, but if we stay put also where we are, I think we will catch up in the next 12-15 months. But yeah, staying in large caps is what Rahul Singh, who was our CIO, his view has been very, very clear from day one. While earnings will catch up, as I would rather say. Fair enough. I think that's quite a well summarized version. Okay, so my second question is that if someone is going for a junior Nifty index fund, how do we present a USP for Tata Mutual Fund, and why not a junior Nifty index fund? Uh, so I think you know the most important aspect. If I look at today Nifty Next 50, uh, that fund this category apparently is very very robust in terms of the category. I think if I had to put at the market cap level, uh, in terms of the market cap, I think
91,000 crore ka market cap and the smallest company, the 100th company. And I think that gives us the comfort that the smallest within the large, in the mid cap, in the Nifty 50 per se, gives you that comfort on the volume, on the liquidity, uh, their potential, the next 50, then their potential next 50. I would rather say that the potential Nifty 50. And I think they are like those Ranji players, typically that analogy is coming through that they are the Ranji players which are certainly have the potential to be in the India 18. So somewhere you would want to kind of be in that space which gives you that comfort of earnings which is coming through. Second, the volume depth in terms of the market cap. And third, primarily what we think that the growth in this segment is sporadic. So if you look at historical track also, when it actually runs up, it runs up very swiftly and it beats the larger index. So predominantly, if you look at Nifty Next 50, it gives you that alpha which apparently it deserves within the large cap category. So you're not being conservative, you're trying to at least play being conservative, but you are capturing the alpha. Last 1 year obviously has not been great. I think Nifty Next 50 has corrected almost by 11% versus Nifty 50 which is about -3%. तो ज़्यादा गिरा है। आप 500 को भी कंपेयर करेंगे तो उससे भी ज़्यादा गिरा है। But that makes a compelling reason that this possibly will give you that catch up when markets rebounds. Yeah, so I'm completely convinced with that outlook. But my question is, if a client is pitching a Nifty Next 50 index fund, how do I pitch Tata Nifty Next 50 in comparison? So if he's going for an index fund, Nifty Next 50, what is the USP of Tata which I can, portray to him? So I think, see, this in passive index, the category is pretty simple. I think we are just trying to mirror the benchmark. The differentiation, obviously, here is that while as a firm level, we would want to be more efficient in terms of keeping our expenses low, in terms of the tracking error. That is obviously with time it will catch up. But predominantly, when you look at investing into any passive index fund, it is the efficiency of the tracking error, it is the efficiency of how we are managing it. At a firm level, I think we think that we believe that this category will grow. Obviously the category is already present. Um, it's undifferent that unlike an active fund house where you have investing into something which can give you something different. It is same or similar of what others are doing. It is just the efficiency at which we want to manage. And I think this is a core category which we think we'll be able to deliver. So you can certainly put your bets basis that Tata will ensure that you are in the right space and in the right category. And certainly, timing point of view, it also will give you an additional edge in the next 3-6 months for you to look at acquiring units and trying to be in it. So I think I would rather say that this could be something in times ahead we'll get to know. But rather at this point in time, I think investing with Nifty Next 50 category itself is a great opportunity. Tata certainly is one of the offerings which are available, would be available in the market. Okay, understood. And this last slide which you had flashed, which is showing the XIRR, this is of which period? I mean, how many years XIRR is exactly that? SIP over how many years? This one. Yes. So what we have done, we have picked up SIP starting from 1st Jan 2023, and we have continued till 2025. So I think it's a good 23 years of data. Okay. So Okay, understood. that gives that comfort of long data. Thank you so much. Thank you. No problem. Thank you so much. Thank you, sir. We do not have any further questions. Just a minute, sir. We have. Sir, what Sorry. will be the TER, total expense ratio, for this fund? Sorry, I was not able to hear you clearly. If you could What repeat. will be the TER of this fund? So obviously the TER will come as we launch the fund. जैसे fund launch होगा, हम उसको the idea is कि हम लोग इसको allocate करेंगे और
जितना efficiently we are able to manage it, the TR will keep coming down, the tracking difference and the tracking ratio. So I think once we launch the fund, only then the tracking ratio comes. We need to wait for some time, at least 2-3 months, and then the ratio comes. But I think most of our tracking ratio are very efficient. So I think we will ensure that we will want to be also in the same. So I think that's it for the questions. Thank you so much, and do contribute to the product which we have launched. Thank you so much. Okay, Thank you. okay, okay.